हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। यार एनर्जी थोड़ी कम हो तो भाई संभाल लेना, आपको पता होगा कि क्यों एनर्जी कम है। मगर Yeah, of आज course. हमारे साथ जुड़े हैं रोशन भाई एलएफसी अहमदाबाद से एंड अनुकुश इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट से। आप दोनों को जानते ही हो, पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं। सो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं, टॉपिक पे आते हैं भाई। कल की मैच जिस तरह से गई यार, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। सो वही दर्द बांटने के लिए हम जुड़े हैं यहाँ पे। सो पहले तो मैं अनुकुश से पूछूंगा कि उनको क्या लगा, उसके बाद रोशन भाई से पूछूंगा। सो अनुकुश, आप बताइए। मतलब क्या लगा, आज काम पे जा नहीं पाया, मैं मन ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब दिन खत्म हो चुका हो। और पता नहीं, बहुत ही गंदा लगता है कि तुम रात को 1 बजे तक जगो, 1 बजे तक, कभी 3 बजे तक, और फिर ऐसा देखने को मिले। लेस्टर के अगेंस्ट भी आउट ऑफ लक जीते थे आई थिंक। वो तो वुड फेस की फिनिशिंग न्यूनेस से ज्यादा अच्छी थी, इसलिए जीत गए थे। इस वाले मैच में भी ऐसे लग रहा था कि ओन गोल ही बचा पाएगा, बिकॉज ऑनेस्टली लिवरपूल वाज सो लिस्टलेस, सो बैड। एंड मतलब फर्स्ट हाफ क्या था, फर्स्ट हाफ एंड वी वर टॉकिंग द प्री शो। रोशन भाई ने पॉइंट आउट किया कि 3 बार हुआ कॉर्नर से गोल लग गए और बाल बाल बचे उसमें। सो आई मीन ऑनेस्टली सीरियसली वही हुआ। कुछ भी हो रहा था कॉर्नर से, तो ऐसा लग रहा था कि स्कूल बॉय डिफेंडिंग हो रखी हो। And honestly, Liverpool were very, very bad. Like one of the worst performances of Liverpool I've ever seen. And जैसे अब्दुल भाई कह रहे हैं कि I couldn't sleep yesterday, सेम यही अब्दुल भाई, यहाँ पे भी नींद नहीं आई। नींद तो ले ही ली है लिवरपूल के प्लेयर्स ने। बस ये है कि अब अच्छे मोमेंट्स नहीं सोचते लिवरपूल के। ये याद रखते हैं कि वो डार्विन न्यूनेस का मिस, वो याद रहता है कि ऑक्सफोर्ड चेम्बरलेन का डिसीजन ना ले पाना, वो याद रहता है साला का पेरिफेरी पे ना रहना, और वो याद रहता है कि हार्वी एलियट कब उसका रोल डिफाइंड होगा, कब एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है टीम में। सो बिल्कुल रियली बैड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। बिल्कुल। सो अब मैं रोशन भाई से ही पूछूंगा कि क्या आपको, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। I mean, I've seen this type of play. मैं लिवरपूल को पिछले कितने साल हो गए, 16 years हो जाएंगे लिवरपूल को सेम मैं सेम फॉलो सेम करते हुए। रोशन भाई, सेम 16 20 इयर्स ऑन। 2006 से मैं फॉलो कर रहा हूँ लिवरपूल को, सेम एंड 2006। तो वी हैव सीन वर्स, ट्रस्ट मी। Yeah, I mean, yeah, to be honest, the worse than this was Aston Villa 7-2. So, I mean, उस हाँ हिसाब से वो तो देखोगे है। तो this is yeah. not as bad as it is. I think bad in the sense कि ठीक है, आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, बट देर आर सम बेसिक्स टू द गेम दैट नीड्स टू बी डन। ठीक है, तुम कितने भी टिकी टाका कर लो, तुम कितना भी जोनल मार्किंग कर लो, तुम कितना भी टैक्टिकल हो लो, देर इज समथिंग एज अ फुटबॉलर व्हेन यू आर ऑन द पिच यू आर सपोज टू डू। सो मतलब हम हमेशा सेट पीस अच्छे से ही डिफेंड करते थे, बट मैं आई वाज सरप्राइज कि कोई जंप नहीं कर रहा था बॉल के लिए। पता है, बॉल आके अंदर ब्रेंटफोर्ड प्लेयर के पास जा रही थी। हाउ कैन यू अलाउ दैट टू हैपन, यू नो, इन एनी केस? एंड other surprising fact was कि you have a World Cup runner-up defender who probably had the best World Cup, and then Van Dijk is supposed to be the best player. आई थिंक और एक मिथ हमें, या मिथ स्लैश बबल जो हमें ब्रेक करना है वो फैबिनियो का। आई थिंक आई एम कंप्लीटली हाँ बिल्कुल। आउट ऑफ दैट फैबिनियो इफेक्ट। मे बी लास्ट सीजन या लास्ट 2 सीजन में ऐसा था कि अब फैबिनियो को क्यों नहीं खिला रहे, नाबी को क्यों खिला रहे, डजंट मेक सेंस। फैबिनियो कितना अच्छा डिफेंड एंड अटैक दोनों को कंबाइन करता है। आई थिंक फैबिनियो हैज बीन फाउंड आउट, ही इज नॉट प्लेइंग वेल। व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, आई डोंट अंडरस्टैंड। मे बी उसके जगह सीधा बाइसेटेज को ही खिला लेते तो एटलीस्ट इवन इफ ही मेड अ मिस्टेक यू हैव एन एक्सक्यूज कि लाइक ही इज अ यंगस्टर, उसको ऐसे यंग गेम है में हाँ। खिलाएगा। हाँ ठीक है, अभी तुम सबसे अच्छे प्लेयर्स को खिला के क्या एक्सक्यूज दोगे? अगर हारना ही है, इफ यू वांट टू लूज इट दिस वे एंड इफ यू आर आउट ऑफ आइडियाज, देन जस्ट लेट youngsters play. I don't understand why doesn't Nat Phillips get a decent chunk of chance, because जब भी वो आता है वो हमेशा एक अच्छा इम्पैक्ट करता ही है। देख रहे थे कि अगर डिफेंस खराब चल रहा है, आफ्टर द सेकंड गोल यू कुड हैव प्रोबेबली मेड अ चेंज, यू नो, कि मतलब लॉवरेन को निकाल लिया था टॉटनम वाले गेम में, वो भी इतना बेकार तो नहीं था। 4 ही गोल से लाइक 4-1 हारे थे, बट हाँ इन दैट एक्चुअली रोशन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे क्लॉप ने क्लेरिफाई किया कि वैन डाइक का जो सब्स्टिट्यूशन था वो इंजरी के वजह से था, वो प्रिकॉशन के वजह से था,
नॉट टैक्टिकल या फिर पर्सनल चेंज वो नहीं चाहते थे, तो एक पहले ही कर फोर्स्ड लेते। सब्स्टिट्यूशन था, ऐसा बोल रहे हैं वो। सो नहीं, आई थिंक वो नहीं होगा ऐसा कुछ। इट इज जस्ट टू सेव वैन डाइक फ्रॉम ऑल दैट ट्रोलिंग नहीं नहीं, एंड जो भी रोशन भाई नॉइस। पैडिंग वो रखी थी उसके पैरों पे ना, अच्छा, ऐसा था जब। क्या? हाँ हाँ, पैडिंग हो रखी थी। But still, I feel like agar if you knew that your player at some point you know that he's not giving 100%, right? So I guess again Klopp का भी थोड़ा rigidity है, and I think हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि वी गेट फाउंड आउट इजीली जब हमारा मिडफील्ड नहीं करता है, क्योंकि टेक्निकली सम ऑफ आवर हाँ डिफेंस इज मिडफील्ड आल्सो। सो इफ इन योर मिडफील्ड यू हैव हार्वी एलियट हु इज सपोज्ड टू बी योर मिडफील्डर, राइट? लाइक तो मतलब वो नहीं, वो it doesn't sit well with me, and surprisingly Naby Keita played really well, which we'll discuss again. हम्म But I think हमें सीरियसली सोचना तो पड़ेगा। एंड जो लोग ऑक्सलेट चेम्बरलेन की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, कंसिडरिंग हाउ मच आउट ऑफ फुटबॉल ही हैज बीन, उसने मैनचेस्टर सिटी मतलब सिंस वर्ल्ड कप जितने भी गेम्स हमने खेले, 3 गेम खेले हैं, ही हैज प्लेड वेल, he has done really well, and abhi hopefully like when Gakpo gets his work permit then he'll come back and Ox will set. But one other thing was कि लोग थोड़ा ऑक्सलेट चैम्बरलेन को बोल रहे थे, बट इतने साल तुम इंजरी, मतलब इतने साल मतलब 2-3 साल he hasn't played regular football. हाँ। Sorry. So in that sense, if you see, he's played well, he's played decently, he's deputized well. But हाँ हाँ दूसरे players should have stepped up. Fabinho should have stepped up. Harvey should have stepped up. देखो, मैनेजर एक सेंस तक क्या कितना ही कर सकता है, राइट? लाइक ही कैन टेल हाउ टू सेट योरसेल्फ अप अगेंस्ट सर्टेन टीम्स, ठीक है? तुम्हें पता है हम्म, कि 15 एंड बिलो टीम्स जो है वो पहला गोल मारेंगे, दे विल सिट बैक। कुछ टीम्स विल सिट बैक एंड दे हैव काउंटर प्रेसिंग, मतलब काउंटर अटैकिंग एबिलिटीज, तो वो लोग करेंगे। तो यू कैन टीच, यू कैन ट्रेन एंड सब कुछ कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे पिच पे जो 11 प्लेयर्स गए हैं उनको फुटबॉल समझ में आता है कैसे खेलना है, ठीक है? इफ योर टैक्टिक्स आर नॉट वर्किंग, स्टिक टू बेसिक्स ऑफ फुटबॉल। बेसिक, हाँ बिल्कुल। इतनी सी कल बात, कल इतने पैसे उनको बेसिक्स ऑफ फुटबॉल आते हैं करके ही तो भी देते हैं ना। तो आई फील लाइक एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। जब व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ओके, ये ट्रेनिंग में सीखा था, ये तो हो ही नहीं रहा है, देयर समथिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट दैट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो छोड़ दो, ठीक है? बोलो कि भाई भूल जाओ ट्रेनिंग में क्या किया है, लेट्स प्ले विथ इन टर्म्स ऑफ हाउ द गेम इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है? मेरे को डिफेंड करना है, सिट बैक, डिफेंस, नो प्रॉब्लम। 45 मिनट्स तक तुम डिफेंड करो, डोंट लेट दैट सेकंड गोल गो इन। पहला गोल चलो ओन गोल है, गलती से चला जाता है, यू कैन ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट देन यू से कि ठीक है, फर्स्ट हाफ आई नीड टू गो इन विदाउट लेटिंग अ गोल इन, एंड देन यू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन सेकंड हाफ। तो मतलब अब आई या सॉरी, हाँ तो बेकार गाइस, गेम। जो भी देख रहे हैं यार, आप अपने क्वेश्चन रखो, मैं सबकी चैट लूंगा। मगर जो भी पैनल पे है, सभी का पहले ओपिनियन ले लेते हैं, सो इसीलिए आप लिखो, हम थोड़ी ही देर में उस पे आएंगे। यार मुझे भी यही चीज लगी रोशन भाई, अनुकुश, मैं बहुत ज्यादा आपसे अग्री करूंगा हम्म, कि जो बेसिक थे ना वो भी मिसिंग थे। और स्पेशली हम्म, लास्ट जब गेम खत्म हुआ ना, तब तक पता नहीं क्यों पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार ये हार्वी अपने मिडफील्ड में नहीं खेल सकता। आई डोंट सी हिम एज अ, आप कह सकते हो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। जो रोल खिलाता है ना, वो मुझे नहीं लगता अब वो कर पाएगा। अटैक में खिलाओ उसे, कोई बात नहीं। फाबिन्यो का बहुत ही बड़ा इश्यू है भाई। अगर हमें कुछ करना है तो वी नीड अ मिडफील्डर। एक एक अभी चाहिए, शायद दो और समर में चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भाई हम कुछ कर पाएंगे। और थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ अब। अब्दुल कह रहा है कि डू यू गाइस थिंक वी कैन सेल सम प्लेयर इन दिस जनवरी विंडो, जनरेट मनी फॉर बेलिंगम एंड आल्सो एनी मोर साइनिंग? भाई तुम्हें बेलिंगम अब्दुल्ला चाहिए ना, भाई, बेलिंगम चाहिए तो गो फंड मी लगाओ, या तो घर घर चंदा मांग के भेज देना लिवरपूल को, क्योंकि नहीं होगा। नहीं बहुत ही होगा। हाँ, इम्प्रैक्टिकल साइनिंग है। नॉट साइनिंग एज इन साइनिंग इज इम्प्रैक्टिकल, इतना पैसा हम नहीं डाल अमाउंट, पाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। we will probably go for a 30-40 million fix who can be trained, but I don't think that price tag हम लोग ले पाएंगे। एंड देखते हैं, विल सी और होपफुली। और अभी अगर अब्दुल्ला भाई ने पूछा कि भाई अभी
बेच ही आप किसे सकते हो भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी का आपको पैसा पैसा मिलेगा। मिलेगा, हाँ वही ना हाँ, सो अभी कोई प्लेयर नहीं है बेचने लायक। भाई। बेचना तब था जब माइकल एडवर्ड्स होता, तो शायद हम लोग स्कैम करके ऑक्सलेट चेम्बरलेन को भी 30 मिलियन में बेच देते, कुछ कुछ करके, लाइक यू कुड हैव डन दैट, बट अभी सब अपने एब्सोल्युटली। कॉन्ट्रैक्ट्स के एंड्स पे भी हैं, तो यू वोंट गेट अ प्राइस वैल्यू आउट ऑफ देम, एंड इवन एट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी 20 से 30 ही मिलता है when he's in the बिल्कुल। last year of their contract, when they're in the last year of their contract. And तो आई थिंक ये सब बहुत फिजूल की बात है। आई फील लाइक कि डू यू थिंक दैट आवर स्क्वाड इज नॉट गुड वंस एवरीबडी इज फिट एंड एवरीबडी इज इन देयर एटलीस्ट 90% ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, हम लोग आराम से टॉप 4 खेल सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि जो अभी इंटरनल बहुत सारी चीजें आई हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि माइकल एडवर्ड्स का जाना, एंड देन जूलियन वॉर्ड इज आल्सो गोइंग इन समर, सो वी डोंट हैव a sporting director yet. Uh, I don't know. We still don't have a replacement for our doctors, to be honest. मतलब वी गॉट अ कुछ न्यू है, डॉक्टर। अपने we did get a new doctor, अच्छा। But then again, they like things like these, no? मतलब इंजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। आई थिंक हमारे ग्रुप से यश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि लिवरपूल का हमेशा से लाइक माइकल ओवन के टाइम्स ऐसा रहा है कि एक प्लेयर को जब लॉन्ग टर्म इंजरी होती है तो दे हैवंट प्लेड वेल फॉर लिवरपूल और दे हैवंट मेड दैट कमबैक। वैन डाइक प्रोबेबली इज एन एक्सेप्शन इन दैट सेंस। डैनी इंग्स ले लो, ऑक्सलेट चेम्बरलेन ले लो, एंड स्टोरीज ले सिमिलर लो। स्टरिज स्टरिज तो ठीक है, ही वाज इंजरी प्रोन पहले से, लाइक ही वाज दैट ग्लास ग्लास काइंड ऑफ अ प्लेयर, मतलब वो पहले से ही था। चेल्सी में भी ही हैड द सेम प्रॉब्लम्स, एंड बिल्कुल। सो बट अभी अभी देखो ना, बिफोर वर्ल्ड कप लुइस डियास वाज फिट, he was there, he was training, and then he got injured again. एंड हाँ, लोग हमें बोल रहे कि कोडी गैक्पो क्यों खरीदा ये वो। अरे भाई हमें चाहिए, अभी हमारे पास अगले 4 महीने में खेलने के लिए कोई है नहीं। कोई है ही नहीं, एग्जैक्टली। हाँ, और अगर यही सिचुएशन रहेगी कि एक दो पूरे सीजन इंजर्ड रहेंगे, तो हमें वी नीड दैट अटैकिंग प्लेयर। मे बी ही पता नहीं, आई मीन इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस साइनिंग फॉर मी। एंड 5 साल के लिए साइन किया ना, 1 साल के लिए थोड़ी साइन किया। इट्स नॉट अ शॉर्ट राइट टर्म साइनिंग, राइट इट्स अ लॉन्ग टर्म बिल्कुल। साइनिंग। कंसिडरिंग अभी फिरमिनो विल आल्सो गो टू सम राइट, क्लब, आई वाज देन अबाउट टू से दैट्स दैट। या। हाँ, एंड सो वैसे वैसे अभी जो आप सभी को दुख हो रहा है, मतलब कि जो भी हम अभी डिसअपॉइंट है, उसका एक और रीजन है कि भाई दिस इज अ परफेक्ट चांस फॉर अस टू गेट इन्वॉल्व इन टॉप 4, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं हम, तो शायद 5th पॉइंट पे होते हैं, स्पर्स से 1 पॉइंट ज्यादा। आई सो थिंक वो इम्पोर्टेंट शायद है क्योंकि अनुकुश से हमारी बात हुई हम्म, थी। अनुकुश हाँ, रोशन भाई, अनुकुश से पहले पूछ लेते हैं। हाँ ले लो ना, अनुकुश, नो प्रॉब्लम सर। हम्म। अ, हाँ, तो वही है तो कि दर्शन भाई, व्हाट आई फील इस कि इस वाले मैच में इफ वी हैड वन, तो फिर हम लोग सिटी से इतना क्लोज हो जाते, एंड लाइक यू नो, लाइक थिंग्स हाँ, कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, लाइक वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज चेल्सी बीट सिटी इन केस आई नो दे आर इन बैड फॉर्म, बट चेल्सी बीट सिटी, एंड देन you know it would have become really exciting, everything would have become really exciting then, but भैया वी लॉस्ट आवर चांस। एंड जो मैं बोलूं, जो लोग 0.00001% चांस था ना टाइटल का, वो तो गया ही, टॉप 4 ही मुश्किल हो ही गया डेफिनेटली। एंड बट आई, बिकॉज आर्सेनल के बारे में हमेशा मुझे लगता था कि द एलिफेंट माइट फॉल एनी टाइम, बट ठीक है, हाँ, लेट्स सी हाउ दैट गोज। हैविंग सेड दैट, दर्शन भाई, ऑन द सीरियस नोट ऑफ थिंग्स, द मिडफील्ड इज अ क्राइसिस एट द मोमेंट। मैं एक मिडफील्डर नहीं कह सकता हूँ लिवरपूल का जो हुआ है सी 5 years down the line playing for Liverpool at this level। एक प्लेयर नहीं वो है लिवरपूल के पास जो हो ऐसा। See, you look at Thiago. Thiago is the only brightest spark at Liverpool, but Thiago again, like he's 33. Anytime he starts underperforming, age will be a factor at some point. Jordan Henderson, as much as we love him, he is declining. A player clearly in the decline. You look at Fabinho. Fabinho has been really bad this season. So I really think, like as some people are also pointing out, Fabinho has slightly improved after the World Cup, but I still don't think he's anywhere near the level which we expect him to be, as Roshan Bhai very rightfully pointed out. जहां तक बात है केटा की, केटा played well last match, but that is the thing। एक बार एंडी रॉबर्टसन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब प्लेयर्स इंजर होकर आते हैं ना, तो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट बैक टू फॉर्म।
right? हाँ, And Keita is वही वाला scene है कि every time he starts playing well, he gets a certain run of games, he gets injured. Up हाँ, now you वही। have to wait for Naby Keita to come back after 4 or 5 weeks. Then you have to wait for him to get back to form. It's like a whole freaking vicious cycle. तो एंड कब तक कर्टिस चलेंगे? जोन्स भी And उसी लिस्ट में जुड़ गए हैं ना, देखो। एग्जैक्टली कर्टिस कर्टिस जोन्स, जोन्स ना क्वालिटी खेल रहे, ना वो फिट रहते हैं, सो इट्स इवन वर्स. लाइक कर्टिस जोन्स का बस थोड़ा अंडरमाइन इसलिए हो ठीक है, जाता है बट बिकॉज ही इज इन द स्टार्टिंग लेवल दैट मच. यस रोशन भाई, प्लीज प्लीज बताइए. नहीं नहीं नहीं, आई मीन सॉरी, कंप्लीट योर पॉइंट, बट द ओनली थिंग विद कर्टिस जोन्स इज कि ठीक है, इट डजंट मैटर, ही इज अ यंगस्टर हु केम फ्रॉम एकेडमी, तो यू हैवंट पेड दिस मच मनी फॉर दिस प्लेयर. लाइक या नाबी हाँ, केटा के वो लिए 50 दिया है, एंड ही तो कोई रिटर्न ऑन और इन्वेस्टमेंट नहीं है. आई कर्टिस गेट इट, जोन्स आई लाइक, गेट इट. आई मीन आई कंसिडरिंग लाइक वेरी वेरी क्रूड फैन बेस मेंटालिटी, पैसे जहां बिगड़ते हैं वहां पे देन यू से कि लाइक अरे ये ऐसा हो गया, टू मतलब आई मीन आई एम कमिंग फ्रॉम दैट I know, like, पर्सपेक्टिव कि totally understand and get your point, Roshan bhai, but at the end of the day, Curtis Jones is a player who plays in the starting 11, and that can affect games. या If he doesn't फॉर श्योर, perform to that level, so Liverpool are anyway losing a lot financially if they are not winning their matches. राइट. बात ये है कि it's like in that regard, because I get your point कि मतलब, of course, but the thing is, in the last couple of years, Curtis Jones has become a part of the first team setup. So राइट. the thing is, बिल्कुल, हाँ, he ट्रू, does play games, and he is expected to play in that starting 11 वाला role. Now a Liverpool midfielder for that matter, उसको एक consistent level पे perform करना जरूरी है, वरना with time it can affect our games like it has been affecting us and our results at the moment. Like we see midfield में, other than Thiago, there's no one single bright spark. Every time the ball is in midfield, either Fabinho or Henderson or whatever, they are just passing the ball to our wingers. I know usually हो रहा है, but there's no spark at all. Like thankfully, कल Keita was creating in that one single half. Other than that, we have hardly seen any creative spark from the midfield. And like the goals, like a lot of our midfielders got a lot of goals last season. थोड़े goals everyone was scoring. No one's contributing. I haven't seen a goal from Keita. I haven't seen a दो अभी आए. Oxlade Chamberlain scored yesterday from the wing position, but like I haven't seen a lot of goals. And then like I think a midfield signing is something which is a necessity, and बिल्कुल, definitely डेस्परेटली like आप देखो, नॉन hundred एक्जिस्टेंट percent. मिडफील्ड है, जिस तरह से Yeah, ब्राइटन, सॉरी ब्राइटन क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेंटफोर्ड अटैक कर रहा था, उनका ट्रांजिशन भी कितना क्विक लग रहा था, देवर इन आवर लास्ट थर्ड, 1-2 सेकंड में ही वहां पे पहुंच जाते थे वो लोग, जैसे हमारे right, पास कोई exactly. मिडफील्डर ही नहीं है। Exactly, and that has been the case in a lot of our games. चाहे वो लेस्टर हो, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट Carabao कप में हो. At the end of the day, it's not about just the results and all. It's about how Liverpool are playing, and if they keep on playing like this, then this is going to be a very very long season, and a season which none of us is going to like or be or fondly remembered by. And fact is कि जो FSG की financially how they work and how they function, it's going to be a really bad thing for us financially and for the club going forward if Liverpool don't qualify for the Champions League. And honestly, for a club that was competing for the quadruple last season, it's a shame कि हम लोग टॉप 4 के लिए ही ट्राई कर रहे हैं और उसका भी पता नहीं कि हाँ, होगा नहीं होगा. So yeah, बिल्कुल, that is how the things are at the moment. I last one thing I want to say that getting a midfielder like Caicedo or Kone or Amrabat at this point in January is a necessity. I don't care how much money it takes them, but they have to, because at the end of the day, it's अगर वो 30-40 मिलियन से लिवरपूल का बहुत सारे एकदम 100 of million 100-200 million बच सकते हैं जो चैंपियंस लीग के पूरे रेवेन्यू में और उस तरीके से अर्न थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज honestly, with the way they are playing right now, they are going nowhere. ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल। और रोशन भाई, ये एक चैट बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, देखो। अब्दुल्ला कह रहा है कि एफएसजी का प्रोजेक्ट अब अपने पीक पे टच कर चुका है, इफ वी वांट टू रिमेन रिलेवेंट, आइदर एफएसजी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सेल द क्लब। आपको क्या लगता है कि एफएसजी को इन्वॉल्व, तो यार मैं नहीं दिखता है दे विल इन्वॉल्व यार क्या? अरे तुम सी, दिस इज रॉन्ग मेंटालिटी, राइट? ठीक है, इन्वॉल्व मतलब क्या? दे यू गॉट योर टारगेट मैन फॉर $100 million, right? Like 85 million pounds जो भी था डार्विन, you made that हाँ, big investment. Yeah, we are not Man City to bring 200 million players in the same season or in the same transfer market. Like वो तो तुम भूल ही जाओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है.
आई मीन इट साउंड्स बैड कि लाइक हम लोग ऐसे प्लेयर्स लेके आते हैं जो ऐसा लगते हैं जुगाड़ू, बट यार यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। नेक्स्ट 3-4 years, नेक्स्ट 4-5 years का भी सोच के तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो वन बिग साइनिंग ईयर जो होना था वो हो गया है। मे बी नेक्स्ट समर में कुछ होगा, विल सी अबाउट दैट, बट आई एम नॉट रियली श्योर। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, राइट? कि अगर हम एक ट्रॉफी जीत गए तो शायद थोड़े भाव बढ़ेंगे। अगर हम लोग चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गए तो देन दैट्स ऑन अनदर थिंग कि लाइक ठीक है, नाउ वी नो दैट मच मनी वुड बी कमिंग इन, सो दे वुड बी विलिंग टू स्पेंड ऑन इट। आई थिंक मैं क्लॉप ने एक्चुअली जिंक्स कर लिया अपने आप को पूरा सीजन स्टार्ट होने से पहले कि लाइक मेरे पास 9 मिडफील्डर हैं, 9 के 9 हाँ गिना बिल्कुल। दिए थे और खत्म, 9 में से एक खेल रहा है अभी ढंग से। तो तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड इट, लाइक जिंक्स्ड क्लब है हमारा, लाइक टेक्निकली वी वर्क ऑन जिंक्सेस एंड ही सेड इट एंड इट हैपेंड। तो आई थिंक इट इज, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्लियर आउट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस पे कितना फेथ रखना है, क्या है। आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट एफएसजी बैशिंग। तुमने मेरे पिछले इंटरेक्शंस और हमारे ग्रुप के इंटरेक्शंस में हमेशा एक हीटेड डिस्कशन होता है कि प्रो एफएसजी एंड एंटी एफएसजी। नोबडी इज प्रो एफएसजी एंटी एफएसजी, एवरीबडी रियलाइजेस द फैक्ट कि हमारा ये लिमिटेशन है एज अ ओनर। वी कैन बिल्कुल। हाँ चेंज दैट रियलिटी फॉर आवरसेल्व्स, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग तो हम लिवरपूल में रहते भी नहीं है कि अच्छा चलो सड़क पे उतर गए, लिवर एनफील्ड के गेट्स के सामने खड़े हाँ हो गए और हमने कुछ प्रोटेस्ट कर लिया एंड वी कुड से कि भाई हाँ हमारे प्रोटेस्ट की वजह से बाहर चला गया, राइट? सो वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट, देन वी हैव टू वर्क विद इन द रियलिटी ऑफ ठीक है अच्छा मेरे पास ये ओनर है। भाई कुछ क्लब्स के पास ओनर्स नहीं होते, कुछ क्लब्स की फ्यूचर्स बहुत अनसर्टेन होते हैं, तो कंसिडरिंग दैट वी आर far better in that situation. Maybe this is too much positivity for some people, but है हमारे पास एटलीस्ट No, एक that's क्लब है। nice. That actually makes me feel better, Roshan, right? Like now that you look at it like that, makes एंड sense. ऐसा तो नहीं है ना कि वी हैव स्टॉप्ड बाइंग प्लेयर्स एट ऑल कंप्लीटली, राइट? लाइक ऑब्वियसली इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई समवन टू गेट समवन एट द बेस्ट प्राइस। अभी देयर इज अ ट्रांसफर फिलोसफी वी हैव ऑलवेज हैड कि सेल टू बाय और बाय प्लेयर्स। अरे कोडी गैक्पो को भी 44 पे तो नहीं खरीदा है ना, पूरा एड ऑन्स करके ही खरीदे। हम्म, दैट हैज बीन आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड सो sometimes some clubs don't like add-on stuff, they like upfront payment। तुम्हें क्या बिल्कुल। लगता है हम टीमो वर्नर को नहीं ला सकते थे? हमने ऑब्वियसली उसको 35-40 प्लस एड ऑन्स दिए होंगे। चेल्सी ने अपफ्रंट 55 दिया, देन ही वेंट देयर। आई डोंट थिंक वी डिड नॉट हैव ट्रांसफर इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर डिस्कशंस आल्सो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम विल नॉट बी एबल टू गेट अ प्लेयर। मे बी वैन डाइक जैसे प्लेयर्स, एलिसन जैसे प्लेयर्स के टाइम पे हम बहुत ज्यादा वी जस्ट वांटेड देम एनी हाउ फॉर श्योर। तो Yeah. तो हमारे पास एनी हाउ फॉर श्योर में सिर्फ जूड बेलिंगम है हु इज वे आउट ऑफ आवर बजट राइट नाउ। आई थिंक अभी रिसेंटली मैं कहीं तो सुन रहा था, प्रोबेबली अ रूमर, बट मैथ्यूज न्यूनियस के बारे में पहले से भी था थोड़ा सा इंटरेस्ट, एंड हाँ देन दे आर लुकिंग बैक एट हिम। आई Hmm. थिंक 44 एंड मिलियन। यू नो द अदर रीजन इज maybe Jude Bellingham becomes a flop for 100 million। फिर तुम क्या बोलोगे उसको? तुम शिट जॉन जोशल भी बोल दोगे? सो यार हम सो एज फैंस वी आर एज रोशन भाई। अनरीजनेबल एज वी कैन, ठीक है? हाँ तुम लोग बोलते मतलब आई मीन फॉर डार्विन नूनेस पीपल से कि लाइक गोल कब मारेगा, गोल आएगा भाई। लुइस सुआरेज आल्सो फर्स्ट सीजन ही डिडंट डू एज मच। तुम उसका अदर वर्क रेट आउटपुट देख लो ना, वो कितने सारे रन बनाता है, वो कितना भागता है, वो कितने सारे ट्रैक बैक करता है, साला से ज्यादा ट्रैक बैक करता है इनफैक्ट, टू बी ऑनेस्ट तुम देखोगे। सो देयर एज अ प्लेयर एज अ होल व्हाट ही गिव्स यू, goals will eventually come, it will come for everybody। तो बिल्कुल। तो ठीक यार है, आई मीन रोशन भाई वैसे सभी सॉरी लिवरपूल फैन को अटैक की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो नहीं नहीं जैसे नहीं आपने कहा अटैक ना कि भाई सॉरी मैं एक वो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखोगे अगर डार्विन ने अपना पहला चांस कन्वर्ट कर लिया होता तो वी वुड हैव बीन हाँ, इन अ डिफरेंट पोजीशन, एंड देन absolutely. मिडफील्डर्स कुड हैव आल्सो कैपिटलाइज्ड ऑन दैट कि चलो भाई अभी 1-1 हो गया है, अपने जितना भी बेकार खेला है अभी लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स गेट बैक इनटू द गेम वाला सिचुएशन था। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन। सी
something has to work for you, right? Like, let's say your attack is we take Klopp's initial era. We were scoring goals, but we were leaking goals because of heavy metal football. जो भी हम लोग खेलते थे, we were exposed on the back, but there were at least goals in the front, right? We are leaking goals and we are not scoring goals. That can't happen. So like there has to be something, ना? तो इसके लिए तुम 4 खाओ, but you have to score 5 also. So in that way, I get that frustration कि like हमें score करना चाहिए, but then you are pinning um all the frailties of a club on one guy, जो उसका fault भी नहीं है. हाँ अगर हार्वी एलियट फील्ड के बीच में ऐसा बेकार सा डमी करेगा, जब 3 बार बॉल हमने लूज कर दिया, लिटरली तभी गोल खाया था. किसको डमी कर रहा है भाई? तू बॉल को लेके रख ना, नहीं तो स्टैंड में मार दे भाई. थोड़ा सा तो सांस लेने दे. लाइक लास्ट, मतलब वी हैव टू ब्रेक अप द गेम स्ट्रेटेजिकली. तो जब हार्वी एलियट ऐसा करेगा तो उसमें नूनेस की क्या गलती है? ठीक है. हाँ हाँ तो in that sense I'm saying कि like cut that guy a slack. He's actually doing very good for a person first season, and like Portuguese league and Premier League is completely different ball game, and so he's True. still trying to understand, he's still trying to adapt. अभी ऐसा तो नहीं है कि मतलब फैबिनियो ऐसे मस्त क्रिस्पी थ्रू बॉल्स डाल रहा है या क्रॉसेस डाल रहा है कि like Darwin has this service and he is fucking it up. See, that is the thing. और Like, मैं honestly, He's मुझे not भी having यही the लगता है. service and then you're expecting कि like वो मतलब चांदी का सिक्का थोड़ी है कि he'll give you the returns and dividends. वो सब थोड़ी कर सकता है. वो डिफेंड भी करे मिडफील्ड, मतलब वो बंदा खुद ही थ्रू बॉल डाले और इतना तेज भागे कि वही फिनिश कर ले अपना थ्रू बॉल को. You're expecting that. See, on some other day, वो न्यूनियस ने जो second half में जो just offside था, I think just by an inch or so. Like if Nunez scores that, Liverpool get a second, then it becomes a whole different ball game altogether. One And he and gets as the like confidence. and हाँ बिल्कुल Huh. And as Roshan bhai really rightfully pointed out, see at the start of the season, I know Arthur वाले move को काफी लोगों ने बोला था कि लोन पे क्यों ले आया, but whatever it is. Now if Arthur had stayed fit and if we would have if Fabio Carvalho would have clicked in his first season, then बात ये है ना कि अगर अभी midfield ऐसी होती कि suppose Thiago, Carvalho और Arthur की midfield है और they were thriving and doing really well, then no one would be complaining. So वही है कि आई थिंक जो हुआ है गलती जैसा भी है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट इम्प्रोवाइजिंग एंड गेटिंग अ गुड साइनिंग और टू इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो कैन रियली चेंज थिंग्स इन द लार्जर स्कोप ऑफ थिंग्स. शैन भाई एक्चुअली राहुल की भी स्ट्रीम स्टार्ट हुई है. सो मुझे लगा कि आप वहां पे जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, आप आए यहाँ पे, मगर वो अकेला हो जाएगा. हाँ हाँ, तो थोड़ा आप सा बात यहाँ करके पे निकल हाँ जाऊंगा. रिएक्शन देके वो वरना वो अकेला हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ. मैं बस थोड़ी सी बात करूंगा यार. हाँ मैं बस इतना कहना चाहता था बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी कथारसिस करने आया हूँ, क्योंकि मैं इन सारों की बात सुन रहा था, आप लोगों का भी वैसे ऑफ एयर भी देख रहा था. तो रात मेरी भी सही नहीं गुजरी और मुझे पता है आप तीनों की भी सही नहीं गुजरी होगी. नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं फैन भाई, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, द थिंग इज कि मुझे लगता है स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हैं बट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी हैं. और जैसे कि जेमी कैरेगर ने कहा, एंड ही कुछ बातों से मैं उससे एग्री करूंगा और कुछ बातों से मैं उससे एग्री नहीं करूंगा. मैं कल उसको सुन रहा था स्काई स्पोर्ट्स पे. एक तो उसने कहा कि दिस इज एन एजिंग स्क्वाड. ठीक है, आपका एजिंग स्क्वाड है, लेकिन कल आपका कोनाटे खेल रहा था, ही इज 23 इयर्स ओल्ड. सिमिकस खेल रहा था, ही इज 26 इयर्स ओल्ड. हार्वी एलियट खेल रहा था, ही इज 19 इयर्स ओल्ड. देन यू कैन से डार्विन नूनेस खेल रहा था, ही इज 22 इयर्स ओल्ड. आई थिंक यहाँ पर काफी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि यंग खेल रहे थे, बट अगेन हमारे पास, मैं पहले भी रिएटरेट कर चुका हूँ कि 22 से लेके 28 की एज ब्रैकेट तक एक भी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर नहीं है या सेंट्रल मिडफील्डर नहीं है. Fabinho is 29 years old, I know that. But उस रेंज में आपके पास एक भी सीएम नहीं है. मैथियस नूनेस की, जैसे भी भाई ने बोला, he was linked in summer as well. और अभी वो दोबारा से लिंक्ड हो गया क्योंकि हमें अब हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए, हाथ पैर हमारे फूल रहे हैं क्योंकि हमें समझ आ गई कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी. तो ये जो है ये चीजें हैं. सेकेंडली मुझे लग रहा है कि एक और स्टेटमेंट जो कैरेगर ने दी, उसने कहा कि कल उसने बड़ी अच्छी बात की कि लिवरपूल के जो प्लेयर्स हैं ये क्लॉप प्लेयर्स नहीं लग रहे. दे आर टेक्निकली वेरी गिफ्टेड, दे आर टेक्निकली वेरी साउंड, लेकिन क्लॉप के सिस्टम वाले प्लेयर्स ये नहीं लग रहे. और क्लॉप उसी वे में खेलना चाह रहा है, बट दीज आर नॉट द प्लेयर्स जो कि उस वे में इनकलकेट आप कर सके या उस रिदम में आ सके जो रिदम आप खिलाना चाह रहे हैं.
और वो रिदम था प्रेसिंग। हम अब प्रेसिंग ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वी ऑल नो दिस, क्योंकि हमारे या तो प्लेयर्स 19 साल के हैं या हमारे प्लेयर्स 35 या 34 साल के हैं। सो या फिर जेम्स मिलर है हमारे पास, जेम्स मिलर। सो दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन और बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। आपको एक तरफ नजर आता है कि ठीक है क्लब कहाँ जा रहा है, जब आप अपनी फ्रंट थ्री की साइनिंग्स देख रहे हो, ठीक है, यू आर प्रोबेबली सम इन सम एक्सटेंट यू आर सॉर्टेड आउट। बट जब आप अपनी मिडफील्ड की साइनिंग्स देखते हो, आप उसमें एक ऐसा नाम नहीं ले सकते उस मिडफील्ड की साइनिंग में कि आप कह सको कि यार हाँ ये फ्यूचर की के लिए अच्छा हो सकता है। ओके फैबियो कार्वालो, आई नो, बट अगर कल वो भी खेल रहा था, हालांकि मैंने उसको बड़ा सपोर्ट किया कि कर्टिस जोन्स की जगह फैबियो कार्वालो को आना चाहिए था, मैंने कल बड़ा कहा ये। लेकिन मुझे लगता है अब मैं जब हाइंड साइड में देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यार उसको तो फिर बुली करते ही है। अगर शेम्बरलिन इतना स्ट्रगल कर रहा था अटैक वाइज, तो कारवालो को तो बुली करके रख देते ये, उसको तो मतलब बलात्कार कर देते उसका। तो एंड सेकेंडली सेमिकस, सेमिकस का भी काफी प्रॉब्लम्स है। बट दीज आर नॉट जस्ट यू नो मिडफील्ड इश्यूज। कल हमारा साबित हुआ है कि हमारे सिर्फ मिडफील्ड इश्यूज नहीं है, हमारे और बहुत से मसले हैं, वरना वैन डाइक को आपको 45 मिनट में सब्स्टिट्यूट, हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट ना करना पड़ता। he had a shit game, we have to say this. So अरे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लिवरपूल के हर सीजन में एक स्टिंकर आता ही है ऐसा बहुत ही बेकार, वेर यू डोंट नो कि लाइक ऑन विच साइड ऑफ द बेट दे गॉट ऑफ। और जब सब चीजें गलत होती है ना तो सभी गलत लगता है, हर साइनिंग गलत लगती है, फैबियो कार्वालियो से लेकर हार्वी एलियट के प्रमोशन से लेकर सब कुछ गलत लगता है। लाइक दैट इज हाउ वी आर, मतलब एक डाउट आता है तो सब कुछ ही डाउट करने लगते हैं अपने, एंड देन वन गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज गाइस हम उनको सर पे चढ़ा लेते हैं कि भाई ये तो फ्यूचर कुटिन्यो, ये तो फ्यूचर साला, ये सब बोल देते हैं। तो एक तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस की भी बात होती है कि भाई तुम 19 साल के 17 साल के लॉन्डो से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समझ लो, मतलब हट्टे कट्टे मिडफील्डर ले लो तुम, ब्रोजोविच जैसे मिडफील्डर ले लो तुम, क्रूज जैसे, कामाविंगा तो फिर भी यंग है, बट लाइक स्टैचर देख लो। हाँ स्टैचर, मतलब तुम लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर भी देख लो ना, लाइक मतलब ऐसे भी नहीं है कि मैं एक बार मैच देख रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि ये बाइसेटिच इतना पतला क्यों है, लाइक एकदम माचिस की तिल्ली जैसा, ही इज वेरी लीन। तो you're bringing a bit, एक मिनट, कर्टिस जोन्स की वही बात हुई हमारी कल कि वो यार कर्टिस वो जोन्स भी भाई, अगर बल्क हो जाए तो थोड़ा, तो यार दैट आल्सो मैटर्स ना। अभी अगर मैं रियलिस्टिकली थियागो, हार्वी एलियट और फैबियो कार्वालियो इन तीनों को उतार दूं तो भाई मार देंगे, वो रोड रोलर से लेकर ऐसे चढ़ा देंगे उनके ऊपर। मतलब नेक्स्ट मैच इज रियल मैड्रिड, if we are मैं if उसके बारे में anybody is सोचना भी forget। नहीं चाहता, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता भाई। कितना डिप्रेशन दोगे भाई हमें, बस कर दो यार। अरे अभी देखो तो यहाँ वुल्फ पे की फिगर अब्दुल्ला, करो भाई, so when वुल्फ we की फिगर करो। अभिषेक कब से आके मुझे यही चैट लिख रहा है, मतलब कि जब से कल हारे हैं ना, मुझे डीएम में यहाँ पे सभी जगह पे कि भाई मैड्रिड आने वाला है भाई, वो मैड्रिड का फैन है। सो सी मैं बहुत तो डर अच्छा बोलता लग हूँ, रहा चलो ब्रदर, मैं देखो निकलता हूँ, मैं निकल रहा हूँ। राहुल है। और है ना वो, दर्शन भाई मैं भी निकलता हूँ, ठीक है चल मैं मुझे ठीक भी है। निकलता थोड़ा सा। ओके थैंक यू दर्शन भाई, थैंक यू थैंक यू यार दोनों को थैंक ज्वाइन करने के लिए भाई, थैंक यू यार। हूँ। मैं और एक पर्सपेक्टिव देता हूँ इस गेम का। यू कुड से कि लाइक हम रियल मैड्रिड खेलने वाले ना, तो उनको बस यही दिखाना था कि कितना बेकार खेल रहे हैं, क्योंकि अच्छा खेलेंगे तो वो और अच्छा खेलेंगे। तो अभी अभी वो लोग को ऐसे दिखा दिया ना हमने कि भाई हमारे तो लगे पड़े, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके गन दिखाएंगे हम लोग को, हम लोग जाके नहीं। आई फील यार एक बेकार गेम हमेशा एक सीजन में रहता है, लाइक प्रॉपर स्टिंकर जिसको बोलते हैं ना, वो ये था। जाने आई फील लाइक वी आर रीडिंग इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई फील मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स से ज्यादा, मैनेजमेंट लाइक क्लॉप मैनेजमेंट साइड, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट नीड टू बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर पॉलिसी। हमारी क्या ट्रांसफर पॉलिसी, हम लोग पहले भी ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वेट करना चाहिए कि किसको लेना चाहिए, कितना स्पेंड करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। बिकॉज तुमने देख लिया यार, लिवरपूल में जब भी कोई भी बड़ा साइनिंग आता है, मतलब फॉर सम रीजन आई फील लाइक कि लिवरपूल इज द ओनली क्लब जहां पे जब भी कोई बिग साइनिंग होती है तो ज्यादा क्रिटिसिज्म गोज टू दिस क्लब
क्योंकि हम अपने थोड़ा क्या बोलते हैं मीन से ज्यादा अगर करते हैं एंड जब वो फ्लॉप होता है तो सारे फैंस एंड सब कुछ उसी पे टूट पड़ते हैं। नूनेस हाँ ने गोल मार रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो ये हालत है। जैसे कि नूनेस का इससे बेकार सीजन जा रहा होता तो क्या ही हालत होती। हाँ, एंड देन और यू देखो एंड देन टोटल यू 12 गोल इन्वॉल्वमेंट है उसके, फिर भी ये हाल है उसकी। ठीक है। सो और सो इमेजिन न्यूनेस की ये हालत पे क्लब का ये रिएक्शन है, तो हाउ डू यू थिंक द ओनर विल गो एंड बाय अनदर 100 मिलियन एंड वो फ्लॉप हो जाएगा तो फिर ये सारे फैंस जाके उनको बोलेंगे। तो ओनर्स के लिए कितना है वो है कि लाइक हाँ भाई हम इंटेंट दिखाएं और वो प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो भी हमारी गलती, हम इंटेंट नहीं दिखाए और हम नहीं लेके आए तो भी हमारी गलती। तो हमें एक बिल्कुल रीजनेबल एक्सपेक्टेशन तो रखना चाहिए। मतलब बार बार लोग जो ये डिस्कशन सीधा एफएसजी के पास पहुंचा देते ना हम लोग, तो ये जो प्लेयर फील्ड हाँ पे खेल बिल्कुल रहा है बिल्कुल। उसको भी तो होना चाहिए ना कि आई एम प्लेइंग फॉर लिवरपूल, मैं ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता बिल्कुल। इंडिविजुअली। एंड सो इफ वन प्लेयर थिंक्स True. इंडिविजुअली, इफ 11 प्लेयर्स थिंक कि लाइक मैं एक स्टिंकर परफॉर्मेंस नहीं देगा, मे बी वी वोंट स्कोर अ गोल, मे बी वी डोंट इवन कंसीड, 0-0 ड्रॉ भी हो जाता तो भी क्या होता, वी कम आउट ऑफ इट लुकिंग डिसेंट इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दिस। जस्ट मैं पर्सनली मैं अगर खेल रहा हूँ ना, मैं बोलूँ कि यार टैक्टिक्स है पानी में, आई वांट टू सेव दिस गेम, आई वांट मी टू प्ले वेल एट दिस पॉइंट एंड बिल्कुल बिल्कुल मी प्लेइंग वेल। अगर सभी अडॉप्ट भी कर लेते ना तो भी हम लोग डिसेंट डिसेंट कर लेते गेम इंस्टेड ऑफ द गेम द वे इट लुक्ड यस्टरडे। बिल्कुल। सो युवराज भाई भी True. हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू युवराज भाई Hi, ज्वाइन hi, करने के लिए। Roshan. Hi, हाय Darshan. युवराज, क्या? अ, Hi. जयपुर कॉप से है युवराज भाई। सो ओह नाइस। आप भी अपना Yeah. थॉट्स कल के मैच के बारे में बोलिए। Of course, I was just listening to what he was saying, and most of the things I agree. But that stinker of a game that he mentioned about, actually, that happened at Nottingham as well. The Leeds game that we lost, that was also a very bad loss for us. But of course, yesterday was a massive blow to the top four race as well. And in the context of that, it was a massive, massive loss. And of course, the catharsis and the analysis and the paralysis we can do all day. From last night, we've been doing that, and things are getting heated as well in the community as well, as people are हाँ having बिल्कुल। strong opinions, मैं युवराज strong opinions about FSG. Yeah, ये and सरप्राइजिंगली हमारे ग्रुप में कल के मैच की वजह से नहीं हुआ है, ये पहले हो चुका है। एंड अच्छा वो दिस हैपेंस हमारा पूरा ग्रुप कैन बी uh, ब्लैंकली डिवाइडेड इनटू प्रो टू एफएसजी एंड टू एंटी ग्रुप। एफएसजी। हाँ यस। ट्रू, दो pro ग्रुप and So, में बट जाएगा। बिल्कुल। और yes, यू कुड से ऑप्टिमिस्ट वर्सेस पेसिमिस्ट की बात है, क्योंकि pessimist. यार मतलब there has to be a perfect balance of two, but you can't have like a हाँ But the extreme of problem any is, one. when pessimists get together, no, it's tough for an optimist to stand. नहीं हाँ Because वो तो of हर course it is about strong opinions. If you look हाँ at it in that way, it is about strong opinions. या मतलब बिल्कुल। सी द अदर रीजन इज कि ये इनसिक्योरिटी देख रहे हो, मतलब जब बहुत टाइम से बहुत कुछ नहीं जीता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये वी नीड टू विन एवरीथिंग इन दिस पैच, इन दिस True. पर्पल पैच लेट्स से, एंड हम इतने इनसिक्योर क्यों हैं यार? ठीक है मतलब Desperation, maybe. हाँ हम लोग एक सीजन 8th फिनिश किए थे यार, एंड देन वी वेंट टू चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स, एंड आई थिंक सो इट्स नॉट, Yeah. मे बी वी माइट हैव टू प्ले मोर गेम्स, क्या पता हम लोग को थोड़ा ज्यादा गेम्स खेलना पड़ेगा टू गेट इन थ्रू क्वालिफायर्स टू गेट इनटू ग्रुप स्टेज, राइट? ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। मे सी इट हैज बीन a lot of things considering the bad form, ये बहुत factors की वजह से, so we can't pinpoint one certain thing, and so injuries did not help. Injuries at the utmost wrong times have happened, uh, compounded by generally injury free seasons रहते हैं तो हम लोग के transfers look really good, but then जैसे ही injuries आने True. लगती है our transfer policies like हम क्या कर रहे हैं, so everything needs to be put in a context, and I feel like कि generally for your mental peace guys, एक बस reasonable expectation रखो, don't don't go through this like
हाइज एंड लोज ऑफ लाइक कभी एक मैच रोलर जीत गए, कोस्टर नहीं रखो, हाँ हाँ बिल्कुल। एक मैच जीत गए तो Majority, मतलब हाँ yeah, एक मैच जीत गए majority तो of लाइक the players were sold last night. Uh, हाँ हाँ in the parallel world, majority of the players were already sold, which includes Harvey Elliott, Carvalho, and name any player. All the midfielders were sold apart from Thiago. So that was the बिल्कुल। reactionary side of अ, it. यहाँ पे आदित्य भाई कह रहे हैं कि ओनली प्लेयर वी कैन गेट नाइस प्राइस इज फर्मिनो, बट आई कैन कांट सी बॉबी लिविंग अभी। True. वो भी मतलब कि सभी ऑप्शन पे है कि अगर बेच सके और किसी को ला सके ना, तो एवरीवन इज रेडी फॉर See, दैट। at this point, I think there are some clear deadwoods. अगर कोई उसको accept नहीं करता है, so that is wrong. In the हाँ sense that कि True. like उनको बचा के अभी उनको बोल के भाई अभी खेलेंगे ऐसा भी नहीं है ना. I mean, United kind of did that with Rashford, but Rashford is surprisingly playing really well after a really good World Cup. हाँ तो ऐसे players नहीं है हमारे पास. Some clear deadwoods, right? Like इनको तो हम निकाल ही सकते हैं. So if their contracts are running out, let them run out. Don't let them. I mean, maybe use True. them in league cups and stuff, but like उनको Premier League and Champions League में मत खिलाओ. अगर if that's how you're looking at it. But then But yeah, but then now you ये सीजन को ये keeping this season in mind, I think you should plan ahead and say कि ये अभी कभी नहीं आना चाहिए. And हाँ बिल्कुल। as Shayan said also कि like हमारे पास world class attackers and world class defenders है, world class midfielder नहीं है. We need that बिल्कुल। world class midfielder for sure. So how will that come and but how it will yeah, happen? We're and not there is a really sure. point that people are, yeah, and if there is a point that people are saying that we are not investing enough in the investing, FSG is not investing enough in the club, but we are getting the defenders as a backup. We got Konate, we got Simikas. Simikas we won't count that much, but Konate of course. And in forward we have 5 to 6 world class attackers. But when it comes to the midfield, that choice goes to Jurgen Klopp, the manager of the club. He need to convince, he need to have that authority that he wants to bring midfielders in the club. Why are midfielders not there? And and the other departments are basically more than covered as we look at the backups. But that is the choice of Klopp. FSG in that I don't think has too much of a say, but Jurgen has his set of players and he has, restricted to that for a longer period of बट time. बट I बट feel यूरज भाई, so, डोंट in यू my थिंक opinion. ही वो वो डिसीजन नहीं ले रहा है बिकॉज ही इज काउंटिंग ऑन मिलनर, हैंडो, जो उसको नहीं करना चाहिए था। Yeah. आई थिंक Of मुझे ऐसा course, लगता that है। वही कह रहा हूँ मैं, वो pool of players पे वो ज्यादा rely, मतलब there is too much of a loyalty. I feel so. The other thing is कि like you had a really good last season and then you're having a really bad this season. Maybe in hindsight you could say कि we could have predicted this. Last season we played 60, 63, 64 games, and so the same intensity cannot be expected. But I think pinning all of that blame on Klopp is not right, in the sense that if I was a manager and if I had fit 8 to 9 midfielders, and considering the season that we had, assuming that they were all on the same trajectory and going up or being at that level, I would say कि I have really good 8 to 9 midfielders. We were we were we were fighting Yeah, for 4 some way. trophies with the same midfield, and now the same midfield is not able to perform at any level. So I mean, is that a misperception? Maybe, but was that a wrong assessment? I don't think so. Because let's say if we had an average season last season and then he stuck to the same midfield, then it makes more Hmm. sense. Yeah, we should have made some changes at least. But Yeah. then the same team, which just last season, probably 6 months ago, 8 to 10 months ago, they were playing for four. They played in 4 finals. So I would say ki it I, was just that he thought he was in this false, not false sense. Like it, he. I think he did not make a wrong assessment. It just things didn't work out the way he thought it would. true. That I The think form dipped yeah, Fabinho the together is at the form wrong dipped, time. and his हाँ bubble completely burst, and he himself Yeah. said like, I thought I had 8 to 9 midfielders, now I don't think I have one. उसने अपने press conference में भी बोला बिल्कुल। है. And if you think about it, let's say
we are simulating the conversation, right? So let's say Klopp goes and Klopp like FSG says like how are things going, and then Klopp was like I have 8 to 9 midfielders. He said that in press conference also. Okay, so now the club is thinking, Yeah, chalo, we are sorted in midfield, we don't have to invest there. And then suddenly you are saying we have to invest there. So obviously, and club has to financially plan itself for the year also, right? Like there are expansion projects, there are this is that, and so of course. that has Yeah. to be considered according in consideration with the transfer window also. So ये सारी चीजें भी हुई होंगी. We just got comfortable with this situation we had, and it just got out of hand. ये I think this is probably the first time I'm seeing it play out this way. Even for any other club, if you consider, हमने प्रीमियर लीग में इतने सारे क्लब्स के ups and downs देखे हैं. Sometimes it is just the rigidity of the manager. Sometimes the club doesn't want to invest clearly. Like Arsenal के उस पे भी देख लोगे, for a long time they were not investing, and they had 2 poor seasons with a very young squad, and the same squad is now giving them dividends. So again, बट like वही प्रॉब्लम है. turn around भी Give आई you थिंक too fast many नहीं of है. प्रॉब्लम है a Yeah. देयर yeah. स्क्वाड यंग है, सो इसीलिए वो डिविडेंड मिल रहा है. आई थिंक हम्म. अपने केस में वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नहीं आई थिंक वही वही प्रॉब्लम वही वही मैं हो बोल रहा गई हूँ कि कि अगर अगर हमने जो साइन नहीं कर रहा है नया कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक बार बेच ही देना चाहिए था. मगर अब तो कुछ हो नहीं सकता. सो आई थिंक हम Mm, बात करते हैं कि आगे क्या चेंज कर सकते हैं, जो हम टॉप 4 चाहते हैं, वो yes. उस रेस में हम वापस आ सके. युवराज भाई, आपको The क्या players लगता है? that we have in the squad, उनसे अपन क्या manage कर सकते हैं? That is हाँ the main primary concern right now. Like that Harvey playing in the midfield yesterday was beyond me I mean, he has had हाँ. good because games. Not we are not saying that he is a bad player, but yesterday he was just so bad. yeah, आई थिंक yeah, रोशन and भाई, in the हार्दिक midfield, And परफॉर्मेंस. I you are trying. And if you think about it, there were not a lot of attacks from right where Trent is. But let's say if Harvey is supposed to give backup to Trent, hmm, so that doesn't make sense to me. हाँ, And वही प्रॉब्लम हो yeah, जाता है. and बिल्कुल. I think we really need. Liverpool has always played well when they have been in the three midfield. There have been two defensive midfielders, sort of. One who is more box to box, one who connects midfield to attack, and one who is defense to midfield. And that transition is very smooth. Like Wijnaldum Fabinho was really good. And हम्म. when Henderson was playing that kind of a role, when he was not playing in front, so Wijnaldum Henderson as like two double pivots, like two sixes, jo bolte hai. they were That like they were the engine of the midfield. So exactly. And up and so down, up and down. up and down tackles and everything. And so you're expecting a creative midfielder to do some defensive work. वो थोड़ा सा difficult हो जाता है. And so you're expecting Harvey Elliott and Fabio Carvalho to do the dirty job, which they cannot. And unfortunately, Fabinho is not doing a great job of doing that dirty job himself. So that बिल्कुल. doesn't help, right? Like you can't The decline like of Fabinho has been shocking, to be decline of honest, Fabinho this has season. been very shocking. Very Who shocking. who would have expected that a player who played 4 finals to give such a season? I don't know और what Matlab, happened. If we before need the start of the season, I had Thiago and Fabinho as the two starters, first choice players who are going to play every game almost if they are injury free. But the decline in Fabinho's form has, has washed that thought over basically. So then true. introducing Fabio Carvalho and then Elliot and then expecting those 19, 20-year olds who were expected to come into a side in a transition, they starting the Premier League games full throttle. That didn't help. That idea didn't help. And the first senior starters, of course, Naby Keita, he, of course, we know हाँ. he has his place. Even though he played good in last match, but Sorry, yeah, we I cannot agree. expect यार him तुम्हें to. पता है I feel you set up a pace and a tone with your defensive midfielders only. Like you're saying कि you हाँ. can't go past us. You make that hard tackle. It is not about creative midfielders also. Like ठीक है, some clubs have the luxury of having a creative midfielder. Liverpool has done without a creative midfielder. Like after Coutinho, up until now, कौन है तुम्हारा creative midfielder?
तुम थियागो फैबिनियो एंड थियागो also came in fairly late, right? So तुम मिलनर, फैबिनियो, हेंडरसन, इन 3 प्लेयर्स में से with the lack of creativity you have, we compensated it with our fullbacks. बिल्कुल, ट्रू ट्रू। So if that is the policy of having creative fullbacks rather than creative midfielders for the service, then we don't have that like slab head kind of a midfielder जो like घुस जाए tackle में. In fact, John Joe Shelby जैसा player like been like he creates also, but like He's a then sort of a disruptor. हाँ डिस्टर्ब करने के लिए just someone who stands and people are like यार इससे आगे तो मैं निकल like to that fear itself is needed, and Fabinho probably created that fear for like 4 years that he played. This year Yeah. absolutely not. So Casemiro sort of, इस बार but तो उसका, John Joe Shelby is a हाँ yeah, हाँ, like Casemiro, yeah. इस बार तो फाबिन्यो का एक भी टैकल ऑन द पॉइंट हो ऐसा भी मैंने नहीं देखा, अभी हाँ तक नहीं देखा। हमेशा लेट होता है he looks बंदा, very हमेशा। tentative. हाँ True, later. और ये बहुत ही अभी बात बहुत चल रही है, ये जो कमेंट आई है, आई थिंक पता नहीं क्यों मैंने भी कल हाफ टाइम पे यही बोला था कि मुझे लगता है कि हमारी टीम टू नाइस हो चुकी है। जो पहले हमारे टीम में मतलब डोमिनेटिंग प्लेयर्स थे, और तब शैन भाई मेरे साथ थे वॉच अलॉन्ग में, उन्होंने बहुत परफेक्ट वर्ड उसके लिए यूज किया था कि बड़वे लोग थे, मतलब कि वो सामने वाले को गिरा देंगे मगर बॉल जीत लेंगे। सो अभी हमारे पास वो मिडफील्ड में नहीं है। सो क्या आपको लगता है कि ये पेप लिंडर्स की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है? युवराज भाई आपसे, और उसके बाद रोशन भाई से मैं पूछूंगा। हाँ, yeah, okay. Somewhat I feel the Liverpool team of 17-18, if you look at the past 5 years, those couple of seasons, if we compare, we shouldn't with the squad we have, but even if we do, so that is different to this team completely. But Pep Linders का involvement, I'm not too sure कि उस चीज में इतना है. You can't say Pep Linders ने influence किया है this. He had any influence in this? This is the entire team setup, and the players we had then are a little different, and the transition has happened. Now the players are aging. Those time players were 26, 27. They were hungry, I would say. They were young. They were hungry for the titles. Jurgen Klopp had a clear mentality and the things about his game, and but that has changed. So everything, सबका transition हुआ है, हर चीज change हुई है with time. But now we are not having those players with those legs to play such game, and that is the only thing which is stopping us, not Pep Linders. हाँ, सो देख मैं रोशन एक भाई चीज बोलता आपको हूँ, भी ये लगता है? क्योंकि कारा ने भी, मतलब जेमी कैरेगर ने भी यही बोला है स्काई स्पोर्ट्स में। टेड लैसो देखना बहुत बंद करो यार तुम सब लोग, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि रॉय केंट आया और उसने पूरा सीख लिया, और क्लॉप ऐसा है जिसने अमेरिकन फुटबॉल कोच किया. ही सी हेड कोच ऑलवेज हैज द से इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्लेस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है? एंड एवरीथिंग गोस थ्रू द मैनेजर. अभी तुम क्लॉप एज अ मैनेजर ही देख लो ना, द आर्क दैट ही हैज टेकन फ्रॉम रियलाइजिंग कि इंग्लिश फुटबॉल में विंटर ब्रेक नहीं होता है, where people could take a rest, and let's say कि second half of the season में you could keep up with the heavy metal football. So he's also realized I can't play full tilt 90 minutes at 10 months. मेरे players drop off हो जाएंगे. Like 2 seasons we had seen कि post January our team was just dead. We could not even play football. So in that sense, he it is mostly the first team manager, and then now we have started to like strategically press or probably place ourselves in a way where we don't have to keep pressing all the time. And so abhi tum dekhoge, I personally attribute all of this to personal people's hunger and desire to play for the club. It Exactly. is Yeah, not, of course. if a player desires, he can run that extra mile, he can make that extra tackle, he can hit that extra cross, and so all of this is personal. Yeah, agar influence hota to Pep Linders has been there in this setup for a long time. If it has become, it can never become an assistant manager's club. Like the club's identity cannot be an assistant manager. Assistant manager is there to do drills. Assistant manager is there to do video analysis, tell people how they're supposed to play. In grand scheme of things, it's always the manager
and the main guy who is at helm. So So रोशन भाई And it is अगर रोशन अगर भाई लोगों अगर लोगों की थियरी है, I agree that could be an opinion, but I don't think it's the right opinion. And also Jamie Carragher is not with the Liverpool setup. वो नाम का Liverpool player है, but does he know in and out of what is happening? Does he go to the training ground and see how they are training? So say अच्छा ऐसे क्लब पीछे ऐसे बैठा है and Pep Linders is barking all the orders. अगर वैसी बात है तो then you could say कि Pep Linders is having more of an influence. Klopp जैसे ट्रेनिंग खत्म हुआ वो अपने केबिन में जाके फोन पे बैठा है, ट्विटर पे बैठा है. Like if that is the case, if Klopp is uninterested and Pep Linders is taking over, maybe you could say that. But वैसे ये रोशन भाई आपका नोशन पॉइंट थोड़ा वैलिड लंबा है. है. हाँ. मैं आपसे अग्री करूंगा कि भाई ये जो कारा ने बोला है और बहुत सारे लोगों को लगा इंक्लूडिंग मी, वो डाउट हो सकता है मगर रियलिटी नहीं हो सकती वो. Doubt, हाँ, बिकॉज see, क्लॉप की ultimately the पर्सनालिटी same ही player. इतनी स्ट्रांग see, है कि I भाई think, मुझे नहीं yeah, लगता कि हाँ And if you look at it, Klopp भी है ना, मतलब हमेशा what Klopp feels is what the club and the players feel. तो अभी भी तुम साइडलाइन पे देखो, I agree क्लॉप to that. बहुत बहुत ऐसा ठंडा है. लाइक ही इज नॉट लाइक रेजिंग. ही इज आल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग कि लाइक क्या चल रहा है यार, मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ चल नहीं रहा है, नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम. दैट And also, yeah, and so I and think also I feel, yeah, yeah, Yuvraj. yes, you complete. No, it's the same point. Ki, Yes, like if things turn around, then probably Klopp gets a better hold of people, and when he feels the football, then players also start feeling the football. So I think that I is think, yeah, the thing with Liverpool is that as compared to the other clubs, with all due respect, what our fan base do is we look up to the manager, the coach, more than any other club. Like if there is any sort of an issue with the team, we are not someone who blame the players entirely. We are someone as a community. We look up to the manager. They are held on a pedestal for the Liverpool City as well, and for the fan base as well in general. So all majority of the things, good or bad, we look up to the manager. We see the problem is with the manager. So if not the manager, people are finding things in the assistant manager. So they are looking to both of them for the True. scapegoats, basically the problem, Yeah, the yeah. issue. I think So that is the thing with them. क्लॉप इज बिकम अ टू बिग टू क्वेश्चन. मतलब कि कैरेगर उसको उसी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई ही चोज पेप लिंडर्स. आप ऐसा कह सकते हो ना. Yeah, हाँ. Pepling, yeah, true. I mean, yeah. See, you can ask you question Jurgen Klopp, यार. मतलब what can ये Pep Linders do that a Klopp cannot do, right? Like Klopp is the person who is talking to the owners. Klopp is the person who is orchestrating everything. वो he's हमने कितनी बार बोला है कि how Klopp is a manager in truest sense. So when if he has this much influence, how can you say that कि Pep Linders this team is a Pep Linders identity team? He's definitely there for the tech. Make any sense. Like तू मतलब Jamie Carragher should not be on TV. To be honest, there is no strong good input. To be honest, हम लोग अगर पंडितरी पे बैठ जाएंगे, we might give a better our group chats have better arguments in reality and in the realm of what things are happening. ये कौन सा ख्याली पुलाव है यार कि यार पेप लिंडर्स की like again I'm उसने not बोला क्या creating. ये कैरा का हाँ कमेंट उस था बाय द हाँ वे. कैरेगर हाँ ने बोला हाँ and people have lapped it Oh, up. that's ट्विटर that's पे stupid. everybody That's stupid to say. ठीक है. If it is somebody's personal opinion that they felt that, then But okay, he that is at could a be. pedestal. He is a Liverpool great, to be honest. And I personally don't feel that that is something to be But said. yeah, चलो But I it's चलो think. okay. चलो Yeah, गाइस his opinion. मूव करते अरे हैं पता है, ये मैं इस लिटरली टॉपिक बोलता से. हूँ, अगर पेप लिंडर्स देख रहा होगा ना, वो भी ऐसा बोलेगा पागल है, मैंने क्या किया, मेरे को तो पता भी नहीं. मेरे को क्यों मारा? हाँ हाँ मेरे को मेरे क्यों को क्यों मारा. तोड़ा. हाँ. मेरे को क्यों तोड़ा? सो यहाँ पे क्रिस भाई कह रहा है कि जीनी की याद आ रही है. हाँ भाई वो भाई अच्छा खेल रहा था, man. बहुत अच्छा प्लेयर था भाई. सो एक और क्वेश्चन कि भाई Maybe one player that I thought was like very unfairly let go of was Genie यार. क्यों Yeah, जाने बिल्कुल दी, क्या बिल्कुल. जरूरत थी. और और सही में to be honest. रोशन भाई at आई that थिंक at that point like at that point and यार तुमने उसको उस वाले सीजन के बाद छोड़ दिया जिसमें उसने तुम्हें चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाया.
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही उसके और 2 गोल की वजह even the से हम next season even the next season जिसमें we didn't have most of our players अपन जिसमें अपन barely Allison header at हाँ, the end COVID हाँ, वाला, हाँ, हाँ, उसके अंदर Van Alden played a crucial role. हाँ। उसके बाद the next season उसको last game में Okay, निकाल I देना and so the only thing I could think of is it is not that the club didn't want him. He wanted to go to PSG and play of for a course better challenge because he was there in New मतलब वो उसको न्यूकासल से कब उसको बारसा 2014 जाना में था। आया था ना। आई थिंक बारसा He का wanted to ऑफर भी go था to बाहर से उसको, जाना Barcelona था but मगर that didn't work out। हाँ। but that didn't लास्ट में turn वो out कुछ हुआ well. नहीं सो। अरे और Barcelona has always created a problem for us यार, मतलब just ट्रू being यार, interested in the player, they first of all if they take the player, they ruin him. And even if they come into like, oh, Barca is interested in this Liverpool player, that player is like, oh, I'm just the greatest, I just need to get out of this lowly shanty club जहाँ पे मेरे को कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसी बात करते हैं ये लोग। मतलब बिल्कुल। और अब अभी वैसी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड दे रहा है। देखो शान भाई, हम और रियल मैड्रिड ज्यादातर सेम ही प्लेयर के पीछे जा रहे हैं और आई थिंक उसी की वजह से हमारे वो मिडफील्ड में साइनिंग नहीं हो अरे रहे। चूमानी देख लो, जूड चुआमेनी बेलिंगम आई देख लो, थिंक एंजो भी Yeah, देख लो। I have true. I have a thing. I read a tweet yesterday when Klopp said that we sell to buy players. It's like we run that way. So what? When was the last time we sold a player for huge sum of money? I don't remember, to be honest. It was Coutinho, and after that, मुझे नहीं लगता कि इतना even Sadio नहीं, Mane we lost on 45 million. no, I think we got him So in the same price range and we sold him in the same price range. 33 में हमें बेचा है। हाँ, हाँ, सो सेम ही 33. है, yeah, we सेम ही got him So we around are not. 30-35. Yeah, we didn't make any profit on that player. तो वो प्रॉफिट वाले प्लेयर्स तो अपने पास वैसे भी नहीं होते हैं और करंटली स्क्वाड में भी नहीं है. So we Yeah, won't have the revenue from those players. but the thing is, The like, money coming in. we are also not Monaco, right? Like, we don't scout youngsters and train them in a way like कुछ clubs का that is the policy of the transfer. They scout youngest players, they train them, and they make them a 50-60 million value player and they sell them. It doesn't matter for the club to like how their personal success is necessarily, but that is how they run. But let's say Dortmund run that way? No. no. Dortmund is also No, fairly. Dortmund, no. Yeah. Dortmund goes in and buys sometimes, and sometimes they come from their academy also. आरबी साल्जबर्ग, मतलब कि आरबी ग्रुप वैसे RB करता है। group वैसा है, True. right. RB group. Exactly. But the other thing is, apart from Leipzig, the clubs that do this kind of a business are not successful clubs. Like, ठीक है, मैंने 10 का 60 कर लिया, बट वो 60 को मैंने किसी बड़े प्लेयर में इन्वेस्ट किया है क्या? They don't generally invest that. It generally goes to the club owners. They are happy with the money that is coming in. So वो it again is another philosophy of a club on how the club needs to run. But yeah, you are right though. Like, there is probably after, to be honest, सही में बोलो, रियान ब्रूस्टर के बाद हमने कोई बड़ा सेल नहीं किया है. And Like Solanke, सोलंकी एंड surprisingly. रियान ब्रूस्टर एंड Solanke. सोलंकी जैसा स्कैम के बाद हमने नहीं किया है कुछ. हाँ, वैसे स्कैम तो अब बंद हो चुके हैं भाई। और ये क्रिस वो भाई क्या scam बोले नहीं. कि भाई जॉन हेनरी को उसकी बेसबॉल टीम, एनबीए टीम, एनएफएल टीम सब हेट करती है। आई फील ही इज They, टर्निंग लिवरपूल फैन आल्सो yeah, आई अबाउट टू डू डोंट they थिंग्स। booed नो. him. They booed him last night. अच्छा, ऐसा है क्या? Uh, कौन सा? John Henry, हाँ, नहीं, at the game. They कौन सा गेम? लिवरपूल वाले गेम में? the NFL or the NBA game. I अच्छा, don't एनएफएल I वाले. हाँ completely तो know, but they booed शायद John Henry बॉस्टन as बॉस्टन such. उसकी टीम है ना, रोशन बॉस्टन भाई रेड की। सॉक्स उसकी टीम है, बट आई डिडंट नो दैट द फैंस booed him. See, Yes, the other thing, again, this is also a problem, right? Like, if you have multiple sports franchises, and if you ever get a chance to read at contracts that baseball players get, it is crazy. Like, baseball players ko 50 60 million dollars per year, each player gets that much. एंड सो इफ यू आर थिंकिंग दैट अगर वो लोग इतना कैपिटल बेसबॉल में लगाने के बाद लिवरपूल में लगाएंगे तो तुम को रीथिंक करना पड़ेगा. बट अगेन, दैट इज अ प्रॉब्लम विद कंसोर्टियम्स हु हैव मल्टीपल yeah. फ्रेंचाइजेस. Bowley is on to the same category, I believe. या Todd Bowley. बट ही देन हैव सेकंड बेस्ट। टॉड बोली के लिए चेल्सी एक प्रोजेक्ट है. लाइक, ही वांट्स टू ब्रिंग बैक चेल्सी, हाँ, आई मीन, टू
looks I Global like think it with the that's money they why are spending. Yeah. I think यार 123 मिलियन यूरो एंजो के लिए देना है, आई थिंक बेवकूफी है. एज मच एज आई बट यार लाइक हिम, आई रेट हिम, तो उसको उनके कैसे इतने That is सारे तुम पैसे उनके obvious. पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने साउल खरीदा जो बेकार गया. उनके पास करंटली Aubameyang. हाँ ओबामेयांग ठीक है. आई मीन चेल्सी इज ऑलवेज अ स्ट्राइकर ग्रेवयार्ड राइट. तो मतलब क्या ही है. True. बात तो सही है. But so they are having midfield issues apart from Kovacic. Jorginho is not the best player. Kante has had an injury-ridden season, and so that is why they are struggling. So I mean, why not? यार प्रॉब्लम इज ये वर्ल्ड कप थोड़ा भाव बढ़ा भी देता है. So like the World Cup और kind of happened in the wrong बेंफिका time. इज वेरी क्रूशियल नेगोशिएटर ना. हमें ऑलरेडी पता हो गया है जिस तरह से हमारी डील डार्विन के साथ हुई. उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो नहीं सेल करेंगे. But the other thing is like यार I mean to be honest बेंफिका के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है प्लेयर, तुम्हें चाहिए तो तुम you put that money out ना. हाँ हाँ समझ right. ऐसा But it प्लेयर is है too कि much. I still हाँ feel it. एंजो के लिए 100 is way too much. But It's too much. yeah, see the other thing is कि अगर एक ऐसा ये प्लेयर है, क्वेश्चन पे एक ऐसा आते हैं अब हाँ. उसके बाद Do you think कि FSG will challenge LFC in upcoming months? I mean, they've Yes, always yes. said that, right? Like they have said कि if there is someone suitable, that suitable buyer, I think they'll also not let the club go dry, like hang in dry. And I think True. they also understand कि like they have made a certain connection with the club. They're saying they're with the club. Their interest is Liverpool until and unless they find someone who can ably take over their thing. So that is a good thing for Liverpool, yeah. And it is big coming from a cutthroat मतलब स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज है नो. मतलब जनरली कोई भी नहीं बोलता है कि भाई हम रुकेंगे जब तक लिवरपूल को कोई एक ओनर मिल जाएगा. सो I mean, I guess they came, they achieved, they got some amount of trophies, and I think that's enough for them. And they might want to look for another challenge, so they might look at another sports franchisee, maybe Syria या फिर मतलब Bundesliga में कोई क्लब जिसको वो कम पैसे में खरीद. To be आई थिंक honest, उन्होंने they made a फ्रांस 10x का एक multiple on क्लब खरीद Liverpool. ही लिया ना रोशन भाई. फ्रांस का एक क्लब खरीदा है. आई थिंक अच्छा. मुझे वो उसका नाम अच्छा. नहीं मुझे पता. जहां तक पता है कि they FSG partners with Redbird, and हाँ Redbird owns उन्होंने AC Milan. हाँ And so उन्होंने I खरीदा. think they might go to another club technically. But see, the thing is, considering what FSG got, right? Like they bought the club in around 320 million, and the club is now valued at 3.2 billion. They made a 10x multiple on what हाँ they got. देखो So they're happy. If they want to cash out or that, Hmm. it's not wrong. But ऐसा नहीं बोल रहे ना कि हम अभी पैसे लेके निकल जाएंगे. They are saying कि we'll be here and until we find a good owner. And to be honest, though, finding a good owner is so important. We can't make a Tom Hicks, George Gillett kind of a mistake again. We हाँ. can't तो let Liverpool ये go क्वेश्चन मैं to एक बात पूछूंगा बताओ. युवराज भाई से. हाँ. मुझे एक बात बताओ, ये राइट प्लेयर राइट टाइम कब होता है? क्योंकि 4 साल में एक भी राइट प्लेयर नहीं आया. आर्थर मेलो इज नॉट अ रियल प्लेयर, ऐसा बोल रहे हैं. First of all, he's a real player, but the problem with Arthur Melo is way too much. That was not the signing we were looking for, basically. And 4 साल में सही बात है. We haven't signed a first team starter. We have only signed Thiago, who was the regular first team player, we can say. Other were budding stars, and few were really bad signings. Arthur Melo, I feel till now is one of them, but he hasn't played, so can't blame it on him completely. But yes, साइन ही नहीं किया मिडफील्डर यार अपन ने. इट्स बिन द हाँ, डिफेंडर्स एंड द थियागो के फॉरवर्ड्स. बाद एक भी साइनिंग नहीं की है हमने एक मिडफील्ड में. स्टार्टर तो थियागो ही था, but हाँ Thiago is also now 30, injury prone. He's running all over the pitch. Sometimes मुझे तरस आता है थियागो को देख के. He is doing हाँ so much on the So field. much. He's tackling, he's diving, and आई he's थिंक just giving too much. कल 70 मिनट के बाद लग रहा था कि भाई वो थक गया है, उसको रिप्लेस करना चाहिए. मगर हमारे बेंच पे कोई ऐसा नहीं था कि भाई अगर उसको निकालेंगे तो और कोई 1-2 गोल हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई सही में उसको रखना पड़ा. उसका तो गाइस उसके वैसे ऊपर अगर लोड देख के किसी ऐसा को लगता है कि अब लगे he's full of हाँ work. Yeah.
चलो युवराज भाई, भाई, रोशन भाई, किसी को लास्ट में कोडी कुछ बोलना हो तो आई थिंक मैं अभी स्ट्रीम लास्ट में बस एक गुड न्यूज से जाते हैं. कोडी गैक्पो विल बी अवेलेबल नेक्स्ट गेम, so I think we'll see him against Real Madrid. Yes, hopefully, yes. भाई रियल मैड्रिड Ox के won't सामने play ऑक्सलेट on the चेम्बरलेन को left. मत उतारना यार प्लीज. दैट इज द होल बस वही, पॉइंट. मतलब ठीक है that is बुरा the whole खेले, बट point. ऐसा स्क्वाड उतारो जो compete कर सके. अगर उन्होंने बेकार खेला तो we'll have another catharsis session. But अब तुम अगर if you're setting up yourself against मतलब रियल मैड्रिड के सामने if Madrid, you're setting yourself up to lose, then please don't. Ox, Oxlade Chamberlain won't बिल्कुल start. बिल्कुल. Good. युवराज भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? And we have to go all out for the FA Cup as well. मुझे तो ऐसा लगता है. I want. Let's go. Let's beat Wolves next game. Then focus on the league top 4 and have Cody Gakpo well integrated in the squad Yeah, before Madrid comes. yeah. So that is important. ओके. सो असद यार, असद मैं नहीं देखने वाला भाई, बहुत लेट मैच है. सो शायद प्रशांत भाई अरे भाई देखेंगे, कल वहां देख तुम लेना. ज्वाइन कर लेना. नहीं अ, भाई, अभिषेक भाई पूछ रहे, अरे हमने उस पर डिस्कस कर लिया है डिस्कस अभिषेक कर भाई. लिया. आई डोंट थिंक पेप लिंडर्स इज अ वेरी गुड स्केपगोट. तुम तो ऐसा बोल दोगे यार वो कैफेटेरिया में वो बंदी ने अच्छा खाना नहीं बनाया उस दिन, इसीलिए सबका मूड डाउन था, सबको पिज्जा खाना था, आज पास्ता बन गया. ये वो वाली बिल्कुल बात है. तो बिल्कुल. मतलब इफ यू वांट टू लुक एट रीजंस, यू कैन गिव मेनी रीजंस. वी हैव टू टैकल इट हेड ऑन. तुम बोलो कि क्लॉप की ट्रांसफर पॉलिसी हैज बीन रॉन्ग. He's looking at the midfield completely incorrectly, and I've also said that Yeah. he has to change his transfer Those are the policy things and to argue. sell to buy. ये नहीं भाई, go to the club and say I need a really good midfielder, मुझे इतना दे दो, इस सीजन के लिए दे दो, बाकी आगे sell to buy कर लेना, मुझे अभी चाहिए. And he has to make that argument for himself, if not for the club. And बिल्कुल बिल्कुल. so सो yeah, इन दिस नोट गाइज, अभी ये स्ट्रीम हम यहाँ पे खत्म करते हैं. होपफुली नेक्स्ट मैच में जो वुल्व्स के सामने है वहाँ पे हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि 2 गेम बहुत खराब गए हैं. इवन दो लेस्टर के सामने 3 पॉइंट हमें मिल गए, मगर होपफुली एक अच्छा परफॉर्मेंस हो और एक विन हो, अच्छा कमबैक हो. और उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ. गुड बाय, टेक केयर, और थैंक यू bye guys. अगेन Goodbye. रोशन भाई, युवराज भाई Yeah, ज्वाइन करने के लिए. absolutely. Yeah, चलो गाइस, Thank you. टेक see you केयर, guys. बाय. Thank Bye. you. Bye. Bye.